So, good afternoon, all. Number has reached 20 above, as it is every day. I won't be waiting any further. I'll make them join. Okay. So, Anishka, how are you? Fine, ma'am. Where are you, in Delhi or elsewhere? Ma'am, Delhi. Okay. Who is outside Delhi here? Ma'am, I'm in Kerala. You're in Kerala. Yes, ma'am. You are a Keralite. Yes, ma'am. Okay, beta. Which part of Kerala you are in? In the southern part, Alapura, Okay, okay. So, you fly there or go by train? by train. Okay. So, you have got the ticket for the reverse journey back to Delhi or not? No, ma'am, I'm trying for Tatkal. So, Okay, that ways. Fine, the network is good. You are able to hear me and reply back. I'm happy about it. Anybody else who is outside Delhi? Yes, ma'am, Bihar. Hemant. Yes, ma'am. Okay. So you go by flight, No, ma'am, by train. by train. So how much time you will take to return back? Ma'am, till जब तक ऑनलाइन क्लास हो. When the online classes finish, then one day. Train takes one day. Yes, ma'am. Okay, that's sufficient. Fine then. I suppose the others are also able to hear once people outside Delhi are answering. Who else is there outside Delhi? Anybody else wants to answer to this thing? I'm from Central Haryana. Aditya, you're not clear. मैम हरियाणा से आते हो अच्छा, सेंट्रल हरियाणा. पास है दूर है दिल्ली से? नो मैम, बस स्टैंड से मैं मेट्रो तक पहुंच जाता हूँ 2 घंटे में. अच्छा, इतना तो ठीक है। यस मैम. हम्म। तो बाकी सब अपूर्व वगैरह कहाँ है? परसों तो उसने ज्वाइन किया था, कल का मुझे याद नहीं। अभी देखती हूँ स्क्रॉल करके नीचे। वो 3 बच्चे थे ना जो रहते थे लेकर रूम, जिनसे मेरी शुरू शुरू में बात हुई थी। कौन थे वो तीनों? अपूर्व, हर्षित और जतिन रहते थे लोग. हम्म। कहाँ है इस समय? घर पे। घर पे? कहाँ है बेटा घर? मैम, हर्षित का बनारस, अपूर्व का पता नहीं, भूल गया। ओके। अपूर्व का मैम बरेली है। अच्छा, है आज यहाँ पर? चलो, अब मुझे ये बताओ, आज आप लोग पढ़ाओगे? प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ढूंढो और बताओ मुझे। हमारा चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट का। ओके, सारे प्रोसेस। आज आराम से बस बैठे नहीं रहना। ढूंढो प्रोसेस का क्या मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम का क्या मतलब होता है और प्रोसेस का, और उन दोनों में डिफरेंस। अभी तक तो सेम ही समझते थे ना कि प्रोग्राम रन कर रहा है या प्रोसेस रन कर रहा है। अब डिफरेंस आपको देखना है कि प्रोग्राम क्या होता है, पैसिव एंटिटी होता है क्या एक्टिव एंटिटी होता है, और प्रोसेस क्या होता है। इतना भी मैंने हिंट दे दिया। मैं भी चाइना से
राहुल, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से क्यों नहीं आते? चाइना से आने की क्या जरूरत थी? ये तो इतना पास है। चलो, किसी को नहीं मिला डिफरेंस? Program means a set of instructions. And the other And thing, processes like maybe an instance of program. another child, please tell other than Fida. And programming operating system is a set of instructions that computer executes to perform a particular task. Okay, some other difference? मैम एग्जांपल जैसे हम कोई फाइल इंस्टॉल करें तो वो एक प्रोग्राम में रहेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल इंस्टॉल करें तो प्रोग्राम, और प्रोसेस जैसे हम उस वर्ड के अंदर कुछ टाइप करें डॉक्यूमेंट। देखो, आपने वर्ड एक पहला वाला खोला, फिर एक और खोला उसका इंस्टेंस, तो जिस वाले पे आप टाइप कर रहे होगे वो उस समय एक्टिव एंटिटी होगा। ओके, ये सारे ही सेम है। आपने जब सर्च कर रहे हो तो इतनी सारी विंडोज खोल लेते हो अपने यस एक्सप्लोरर की, एक पे कुछ एक विंडो पे दूसरी ओपन इन न्यू विंडो कर लेते हो। तो अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जिसपे आप उस समय करेंटली टाइप कर रहे हो वर्ड वाले डॉक्यूमेंट पे, बाकी भी खुले हुए हैं, वो उस समय प्रोग्राम्स हैं, बट जिसपे आप कर रहे हो जो मेन एक्टिव एंटिटी है वो प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक प्रोसेस और प्रोग्राम में, कि प्रोसेस को आप बोलोगे इट इज एन एक्टिव एंटिटी। A program in execution will be called as a process. Somebody has sent a message. मैम आप बोलोगे तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी आ जाएंगे। ओके, नाउ इनफ ऑफ जोक्स बेटा प्लीज। चलो ठीक है, प्रोग्राम आगे से जो होता है वो हमारा पैसिव एंटिटी होएगा। अगर वो प्रोग्राम एक ही रन कर रहा होगा तो उसको एक्टिव और प्रोसेस को सेम बोलेंगे, बट अगर आपने काफी सारे इंस्टेंसेस खोल रखे हैं एक प्रोग्राम के, तो वो जिस पे आप उस समय काम कर रहे होगे वो उसका एक्टिव एंटिटी होती है और उसको प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब प्रोसेस के साथ बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, नॉट ओनली द प्रोग्राम कोड। ओके, it consists of stack, heap, data, these parts also. So on your page number 106, draw this diagram of process in memory. एक प्रोसेस जब मेमोरी में होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। So write down, a process is a program in execution. The first line is, a process is a program in execution. Next line, a process is more than the program code. ब्रैकेट में टेक्स्ट, जो प्रोग्राम कोड होता है उसको टेक्स्ट बोला जाता है कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में, मेमोरी में उसको, जस्ट अ सेक। आप ये डायग्राम बनाओ, मैं आके देखती हूँ 1 मिनट।
Okay, drawn it. So you can be asked about it rather than the text. What else is associated with a process? When you talk about it, you have to tell it got a data section, a heap section, and a stack also along with it. प्रोग्राम कोड लिख लिया, टेक्स्ट होता है ब्रैकेट में. Next point is process has associated stack. Underline the word stack also. जो भी आप टेम्परेरी डेटा यूज करते हैं, जो कि लोकल वेरिएबल्स होते हैं आपके, और आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, उसकी रिटर्न एड्रेस वगैरह, ये सब टेम्परेरी डाटा होता है. ये सब जाके स्टैक में से. डेटा स्ट्रक्चर्स पेपर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ना? स्टैक, हीप, क्यू, ये सब पढ़ा हुआ है आपने? यस मैम. हाँ जी. सो दिस इज द सेम स्टैक दैट गेट्स into picture here, where the process creates a stack, and in the bracket you can write it has temporary data. Next point, a process has associated data section also, and that is global variable. The global variable section will be called its data section. And last part you have to write it has got what? Are you on the same page that I am saying? Heap. That is the dynamically allocated memory during process runtime. So whenever a process is loaded in memory, it occupies space in the form of these things. Its program code section goes into the text part. Data section has global variables. Heap section has dynamically running allocated memory space. And stack has temporary data. So these two are shown as increasing and decreasing in the diagram. As and when you call more and more functions time and again, the space keeps on increasing. So it has left space for it. So your process executes in totality. And later part of the course, you will understand that even if memory is not there sufficient in quantity, then there is a concept of virtual memory. How it gives us the illusion that our program is getting full amount of memory as it requires. The pages will come out and go in. So that all that we will see, swapping, how that it happens and all. Right now, this four thing you have to write what is a process and what all is associated with a process. So you see, program is just a part of this process. The thing with which we started the chapter, that is only the program code. Whereas a process, it will occupy space in memory, it will make stack, it will make heap, and all this is the concept of a process.
I hope now everybody will be able to write the difference between a program and a process. The next topic, which is very easy again, a 5 marks question which comes directly, like the interrupt cycle which came for 5 marks directly. I told you we made in the class in CSA paper, and straight away it came for 5 marks. Similarly here, the next topic for 5 marks question which you get is, what are the process states? Lalita, just read out the process states. Okay, ma'am. A process executes, it changes state. The state of a process is defined in part by the current activity of that process. A process may be in the one of the following states. Stop. New. Thank you. Thank you. Okay, ma'am. Manjeet, you start from here. Which are those 5 states? Yes, ma'am. Ma'am, first new, then running, waiting, ready, and terminated. Thank you. You, Hemant, what is a new state? Yes, Hemant, read out these 5 words. What is the new state of a process? Pavan, you read out what is a new state? Yes, Saksham, you will read. Hanji. Okay. Next state. Instructions are being executed. Okay. So, a process, you can see in the diagram below that also, all of you students, please scroll down. Whenever a new entity is being created, it is called as a new process. Then it goes into the ready state. Okay. They have made it number 4th, ready. Basically, we say it like new, ready, running, waiting, terminated. So even if you write like this, then also it's okay for us, because from the diagram which you will draw, you will see that the new process then goes and becomes ready. It goes into the memory and it is waiting to be assigned to a processor. Sachin, you read what is the thing written after ready? You must not have reached on that page also right now. Okay, Priyanshu, you read what is ready state? Ma'am, ready. Hanji. The process is waiting to be assigned to the processor. ओके, न्यू स्टेट हो गई, रेडी स्टेट हो गई. आप सारे बच्चे ये पांचों स्टेट्स लिखोगे भी. यू विल ऑल 5 of these states have to be written in your notebook and the diagram has to be drawn. Then only you will get 5 out of 5 marks. Okay, now the process is ready.
it has got the processor, then it goes into the running state. With suction red, instructions are being executed. When a process is in running state, then that means its instructions are being executed. Now, supposing there is an interrupt, which we studied yesterday, or some input output event has to occur, then normally when we are running a class and some office people bring a message to be signed by a teacher, then temporarily you have to wait. Similarly, the process here temporarily has to wait for some event to occur, and they are very clearly written for some input output event to occur. So next state you have to write one line only, you will write and you will get full 5 marks, but provided you write all of them and draw the diagram. They are very clearly saying in the question paper, draw and explain DMA. Those people who have explained DMA, चाहे थोड़ा सा भी कराओ, and you have drawn DMA diagram, you are getting full marks there. We are doing paper checking of CSA paper. Everything is very clearly written, because otherwise you are getting 2.5 marks. Otherwise you are getting full 5 marks. When they are saying draw and explain, so you just draw and explain these 5. They will cover 2 pages. On 1 page diagram, on 1 page these things. I've been telling you throughout the course that grab the marks. So new, ready, running, then it goes into the waiting state, and when that thing is over, it will again come back to the ready state. It will finish its task which it was given, and from the running state, then it will exit and free the memory. So it will go in the which state, which is the last state, Kishan? Ma'am, last stage is terminated. Yeah, terminated. Okay, the process has finished execution. So all of you have drawn these diagram and written the states. So next is the topic PCB. It is a long one. So let's stop here. From the previous 2 chapters, have you read anything? You have any doubts? Because 3 classes a week are sufficient, I suppose. In online process we have to do, so let's adhere to the physical mode that 3 classes were held. If you are willing, I can take on Saturday, Sunday also. Now I don't have to go for paper checking. I don't have to go for first sem duties. I'm free tomorrow and day after. Tell me, or only on weekdays? Children, are you understanding what I'm saying? Yes, ma'am. Okay. मेरी बात की, मेरे को तो काम है ना, आपको नहीं है। तो मैं तो पिछले 3-4 दिनों से इतने हेक्टिक चल रहा है, पहले यहाँ से उठ के
नॉर्थ कैंपस जाओ, इतना दूर 1 घंटा लग जाता है बाय माई ओन व्हीकल, ड्राइव करके फिर 1 घंटे वापस आओ, वहाँ पेपर्स चेक करो, नहीं तो कॉलेज में जाके ड्यूटी भी देनी है, एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। फिर लंच करती हूँ, फिर आपकी क्लास लेनी होती है, उसके अलावा बाकी काम है। तो फिर इसलिए ये 3rd क्लास हो गई हमारी वीक में। तो आपको तो कोई काम नहीं है ना, तो फिर चैप्टर पढ़ लिया ना सक्षम, मैं कुछ भी पूछ लूं? ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया अच्छे से। वाह 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 वाह, पहले से ही आता था मेरे होशियार बेटे को, वेरी गुड। चलो फटाफट से बिना कहीं देखे ओएस की डेफिनेशन बता दो, रैपिड फायर फटाफट। एग्जैक्ट ही तो चाहिए हमें, जो टिप्स पे होना चाहिए। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द अंडरलाइंग हार्डवेयर। वो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वो तो सारे बोलोगे उसके बाद, बट टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशन इस चीज की। हाँ, वेरी गुड। ओएस की सर्विसेज, उसको कंट्रोल प्रोग्राम क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर की हैं, उनको अच्छे से ग्रैब कर लो। रिसोर्स एलोकेटर क्यों कहते हैं उसको, फाइन। कमांड इंटरप्रेटर, तो ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर भी पढ़ लेना अच्छे से, सिस्टम कॉल्स, एपीआईज, इनके एग्जांपल्स, और ये 3rd चैप्टर शुरू हो गया। वेरी गुड सक्षम, आपके अलावा बाकी सबसे भी बात कर रही हूँ मैं। ओके सॉरी फिदा, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। यस, एनी डाउट फ्रॉम चैप्टर 1? प्लीज रीड द चैप्टर। I think so, library is open, and can you get the books issued or not? मैम जाके नहीं देखा अभी। Okay, but if you want to go, I think so, first year students are having exams, that is there, but you are in now 4th semester and 6th, like that, they should be allowed. I'm not sure. Anyhow, we have this book in virtual mode. Okay, and this generation is more tech savvy, I know. I would at any time love to teach from the physical one. For you people, I'm teaching with this. In the class, you would have seen that I'm always teaching from the book or some notebook. The fact that I had to start in online mode, that's why I'm following this online book. Because you people have this excuse very well that we don't have books, access to books, we are outside Delhi, library is not accessible to us, we have not paid our fees, whatever. Okay, we have to start with the course. Don't look for excuses, like Saksham said, करी क्या रहे हैं, तो पढ़ी लो please, ठंड इतनी है बाहर जाके, what you will do if you are in North India. In South India, I suppose it's pleasant. What is the weather there, Fida? Is she still connected with us or not? Yeah, I can't see her in the list. Earlier she was, now there must have been some network issue. Anybody here who is placed right now in South India? And Rahul, how is the weather there in China? Okay, enough. No jokes. Hearing what? Hmm. और किसी को कुछ शेयर करना है? Ma'am, Rahul is not our classmate. मुझे लगा था someone wants to join लिखा आया था, राहुल नहीं आया था उस समय। मेरे साथ ऐसे बहुत होता था, मेरे तो फिजिकल क्लास में भी आ जाते थे। लास्ट जब मैं टीचर इंचार्ज थी, एक बच्चा आके बैठ जाता था, मुझे आपकी क्लास अटेंड करनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ गया था, वो शीतल मैम याद है आपको, वो चली गई थी, तो मुझे उनकी क्लास लेनी पड़ती थी।
तो वो बच्चा शायद उस कोर्स का था, जी के फ्रेंड्स उसके पढ़ते थे, तो वो भी आ जाता था मेरी क्लास में। आपने राहुल की बात करी तो मुझे वो बच्चा याद आ गया, मैं भूल गई थी, मुझे उसका नाम भी भूल गया अब तो। वही है ना, टीम्स होता तो सबको अपना अपना पासवर्ड यूजर नेम मिला होता। कोविड टाइम में तो टीम्स पे लेते थे हम क्लास, और कोई न्यूसेंस नहीं हो सकती थी। चलो, कोई और डाउट किसी को कि वी कैन गिव द अटेंडेंस इन द ग्रुप नाउ? सो फिर नेक्स्ट क्लास कब करेंगे? नेक्स्ट वीक? यस मैम, ठीक है, नेक्स्ट वीक आगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वगैरह और सारे। थैंक यू, आई कैन सी योर मैसेजेस एंड आई कैन सी योर थम्स अप। फाइन देन, लेट्स डिस्कनेक्ट नाउ। मंडे या ट्यूसडे जो भी पॉसिबल होगा, जब मेरी ड्यूटी वगैरह नहीं होंगी, तो मैं उस दिन आपकी क्लास ले लूंगी। क्योंकि 2 क्लासेस टू बैक थ्योरी ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता मेक सेंस। क्योंकि आई सपोज आपको टाइम टेबल मिल गया आप लोगों का? यस मैम, मिल गया। मिल गया? सारे फिजिक्स के मैथ्स के लग गए उसमें? यस मैम, लग रखे हैं। लग रखे हैं ना, तो फिर मेरा तो शायद 2 पीरियड इकट्ठे दिए हुए हैं ट्यूसडे को, हाँ मैम। है ना? और एक फ्राइडे को है शायद। सो वी विल चॉक इट आउट, ओके? डिपेंड्स ऑन द ड्यूटी शेड्यूल विच आई गेट। ट्यूसडे में वेनेसडे को 2 क्लासेस है एक साथ। अच्छा, वेडनेसडे को 2 क्लासेस है मेरी आपके साथ? मुझे था कि लास्ट ईयर की तरह, लास्ट सेमेस्टर की तरह ट्यूसडे को ही है। अच्छा, एक बच्चे ने भेज भी दिया। और एक फ्राइडे को मैम। ओके, 11:30 और 12:30 वेडनेसडे को है। चलो, ये तो सारा फिजिकल मोड है। अभी ऑनलाइन में तो आप लोगों के साथ, अगर किसी और टीचर की क्लास नहीं हो रही होगी, कोई बच्चे ने लिखा है तो 2024 का है। हाँ बेटा, बिकॉज मैंने देखा है अपना टाइम टेबल जो मुझे मिला है, उसमें ट्यूसडे को 2 क्लासेस हैं हमारी, और एक थर्सडे मॉर्निंग है। चलो, एनी हाउ, जब ऑनलाइन मोड खत्म होगा देन वी विल डिस्कस ऑल दैट, ओके? सो आई एम डिसकंटिन्यूइंग द क्लास, विल मीट नेक्स्ट वीक, ठीक है? थैंक यू। भाई पानी पी के सो जाओ।